Firstly, big fans of all of you. Please give them all a huge round of applause. This is the amazing Masti trio. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you, sir. But we're missing something. We're missing something right now. I think that is the main essence of this thing. jahan par- Something or someone? I think someone, no? Okay. I think, so, yeah. so let me start. Wow, by why don't you saying take कि, over? थैंक यू सो मच कि आप लोग सब यहाँ पर आज आए हो. आज एक बहुत ही अनोखा दिन है हमारे लिए और मुझे याद है कि जब हमने मस्ती की शुरुआत 2003 में की थी तब हम तीनों पर एक लड़की का भूत सवार था. और 2013 में जब हमने ग्रैंड मस्ती की तब हम तीनों पे 3 लड़कियों का भूत सवार था. अरे लेकिन जब भी हमने मस्ती की है कुछ ना कुछ हमेशा उल्टा हो जाता है. हाँ. अब देखते हैं 2016 में क्या कांड करते हैं हम लोग. क्या? बजर कांड क सर उधर देखिए सर. सर कंपनी का क. अच्छा कंपनी क. कृष का काल का क. अच्छा ठीक है यार. कंपनी का क. बजर दबा. बजर कहाँ है? वहां पर है. बजर. But all three together. Come on. We are touching. हाँ कनेक्शन if में you don't कनेक्शन में. हाँ, चलिए. इलेक्ट्रिसिटी इधर से Ready? भेज रहा हूँ मैं इधर से. रेडी 1 2 hey just be careful. 1 2 फट रही है यार. 1 2 दबाया. क्या हुआ यार? क्या हो रहा है? आप कौन? Hi, अच्छी- I'm Ragini. रागिनी MMS. MMS नहीं, SMS. Simple मगर sexy. और मैं यहाँ पे आई हूँ ताकि आप सब पे मस्ती का भूत चढ़े. Ladies and gentlemen, presenting to all of you, Great. Grand. मस्ती. Thank you. Before we move on to, the media question answers and everything. Sir, that one dialogue you know, I have an idea. We'd all love to see that. I love you, Nanda. He's actually Nanda ji, great sound, man. Thank yeah, you. superb. He's actually made that dialogue happen. Oh wow! But this time it's I have a great grand idea. All right, now that we have all of these guys here, I think they deserve a huge round of applause. इनके लिए जोरदार तालियां. Fantastic. All right, so I'm going to ask Vivek also. How was the experience of working third? This is, I think now it's grander also than ever. Masti is grander than ever. How was the experience working on Great Grand Masti? It was great Grand Masti, man. It was great Grand Masti throughout the set. It was incredible fun during the shoot, and I just love these guys. I love working with them. They're like family to me. This whole team, this whole incredible. I love you too. And it was amazing. And we're really excited about Masti 4. Oops. Cat out of the bag. Oops. Yeah, we will surely make Masti 4. Yes. Any ideas for the title? Later. So I'm going to ask Sir, who was the naughtiest among all of these three? Hard to figure out. Yes, I'm going to ask Urvashi also. She's been very quiet. But how was the experience working with these three naughty boys here? Okay, first of all, thank you so very much to all the members of media and everyone present here. The experience was worthwhile. It is the most challenging character I've ever played till now. This is my third film. I'm so very excited and so thrilled. I'm so very thankful to the trio,
be it like Ritesh, Vivek, Aftab, all three of them are amazing co-actors and they supported me in each and every scene and I had a blast shooting for it. And my director especially, Indra Kumar, he's the captain of ship. And I have always adored as a childhood, you know, all his films, be it like Beta, Man, and Dhamal, all these are my favorite films. And Masti has always been my favorite film. And somehow this is the first comedy genre which I'm attempting, and I just hope it turns out to be successful. Also my producer, Ashok Takeria, and everyone, I'm so sorry if I missed out on names. So thank you so much, Indra sir. You are amazing, and I cannot believe that without even, in just like a 5 minutes meeting, how were you able to select and give me such a significant role in the film? I want to ask you, I mean, what made you select me? Because there was thousands and thousands of girls. इसको देखते ही मुझे लगा कि भूतनी तो यही है. But प्यारी भूतनी. Yeah, Inderji, I have to ask you, was she so polite on set also? She's a very polite bhoot, yeah, otherwise. Actually, but जब अपने रूप में आती तब देखना. Yes, some more questions. Inder, what is the reason behind not changing the male star cast, but we have the female star cast being कौन changed पूछ for रहा है? all? कौन क्या सवाल पूछ क्या रहा है? तुम्हारा पूछ रहा प्रॉब्लम है? क्या है? कौन है? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? कहाँ है? किधर है वो? What do you mean? किधर Why है? should they change? What's your problem, कौन dude? है? अच्छा, बैठ के सुसु करने वाले. हम पे क्यों हग रहे हो? Sir, please answer. हाँ जी. क्या क्वेश्चन था भूल गया मैं. अच्छा है सर, अच्छा है, अच्छा है. Okay, next question. एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन था. वेरी गुड, वेरी गुड. अभी हमारी तारीफ होगी शायद. क्या है कि हाँ वो दो माइक. आफ्ताब, रितेश, विवेक, ग्रैंड मस्ती. क्या है कि ग्रेट. लड़कियां हर टाइम चेंज होती है बिकॉज वो सब एज हो जाती है, बट ये मेरे तीनों एजलेस हैं. कौले आज भी एकदम माइंड ब्लोइंग. ऐसा लग रहा है अभी ओवन से निकाले हैं. Vivek, a question for you. Yes, where is this coming from now? Haan, there only, yeah. Vivek bhai, question. Vivek, a question for you. You know, in the month of October last year, when the shooting of Grand Masti was on in Mehboob Studio, you had a very special visitor, that is Salman Khan. Salman met Aftab, Ritesh, and even Urvashi, but we didn't see him meeting you. What was the reason? Is all well? Friends again? He wasn't there that time, so Yeah. it's okay, right? Oh, he was there. Everyone saw us. The media was Where there. you saw? Of course. हाँ. आपकी कोई विशेष टिप्पणी? नहीं, क्योंकि 14 साल से तो मैं ये सवाल सुन रहा हूँ. अलग अलग रूप में. अगर किसी और को आंसर करना है तो कर दो. मैंने बहुत बार आंसर कर दिए ये. Anybody has any interesting? Can I please say something? It's between two individuals. I don't think we should interfere. Yes, and let's Okay. keep it to the film I think also, we'll right? keep it to the film. Let's talk about the I film mean, and it's Great about the Grandmother. film. This is not about the film. You This wish is it about would two be. individuals. You wish it would be. It's more about your bite, but it's okay. Okay. Anyway, Thank you any for more your questions? How easy? Do you see him doing anything else? Ever? I was scared when you asked that question, what is he doing in this poster? I was scared for you, I swear. I mean, I love him, but I was scared for No, you. I think it's because the script is written so well, and every line that you say is out of innocence. So if you can portray innocence, even if it is, it has a double meaning or it has a certain naughtiness, I think it's palatable. So I think we try to maintain a certain kind of innocence in the characters that we portray while doing a naughty comedy. Please don't ask us serious questions. ये प्लीज रिकॉर्ड करके हम लोगों को दे देना. आगे बहुत काम आने वाले. I know. ये आंसर्स. Ritesh, I have a question. Nothing at all. I think he spoke for all three of us. Yeah, yeah. And also, He's very good at mouthing dialogues. And also, Mr. Indra Kumar said, no, we are growing younger every year. So we look more innocent when we do such things. So, Show them your innocent face, Fafu. Ritesh, Ji. I have a question for you. Here. Sir, yes, sir.
Ritesh, like we all know, in Marathi also you made a film last year and you became quite a popular. Like everyone loved your performance and all. So now when you like make a movie which has such adult content and all, आपको लगता है कि आपकी मराठी audience जो है वो एक like disappoint हो जाएंगी कि आपने एक ऐसा adult movie किया? No, I don't think so because that released next year after Grand Masti. मुझे लगता है कि as an actor I get an opportunity to various kind of genres and adult or naughty comedy being one of them. So I don't think I look down upon any genre for that matter. And I'm happy that that Grand Masti was a successful film, and that's the reason we are coming back with Great Grand Masti. And I'm happy that Lay Bhari was successful, and you know I got a chance to do Ek Villain, which was completely different. That was also did well. So I'm okay. I guess audiences have been very kind towards me, and I thank them all. Thank you. And to add to that, I mean, just to clarify the air, I mean, Great Grand Masti is a family film. इसे देखने के बाद हिंदुस्तान में families बढ़ेंगी. Vivek, I have a question for you. Vivek, like पिछले कई सालों से we have not seen you like associated with a big banner. Like everyone who comes in the industry who they want to work with a big banner like Dharma, for example, or Yash Raj, but would we see you working with them with such I big just banners? finished a film with a big banner called Maruti and Balaji, and it's going to release on the 22nd of July. It's called Great Grand Masti, and also did a big banner film with my buddy here for Yash Raj called Bank Chor, which is releasing in October, and yeah, I'm having a good time. Hi Ritesh. Hello. Yes. My question is for you. What do you think about Urta Punjab being leaked and their copies being sold outside Churchgate station? First of all, it's extremely sad that this thing happens to us as an industry. And any leaks, any kind of piracy hurts, and we bleed the maximum because if I think it's important for even the audience to respect the fact that you know one shouldn't support any kind of piracy. Having said that, I think the team Urta Punjab have done a great job trying to stop it. And if it is, as you say, that it's available outside Churchgate, please click a picture and send it to Mumbai Police. You know, it's important. So it's up to you. You can do it. If you know it, tweet the picture and say, CP Mumbai or Mumbai Police, here it's available. Help us. So, you know. Sure. Yes, I think that's Thank pretty you. cool, man. Thank you. Okay, I'm going to ask the boys here. Okay, all the boys. Tell me one memorable incident on the film that, you know, on Great Grand Masti that will make it epic. Fafu? I'm actually terrible with all this, so I'll give it to him. No, I think interestingly, when this film was narrated to me, we all were sitting and toying with the idea, okay, if Induji said, we've cracked an idea and let's do this film. I think the fact that it's about a ghost in their life and that changes everything. कि पहले हम लड़कियों के पीछे होते थे, अब लड़की हमारे पीछे हम भाग रहे. So it's a reverse thing in the entire film, and I think that was unique. And while shooting that, there were many things that happened. I mean, there are so many anecdotes, to be honest, because I can't say one day was better than the other, because, you know, every minute that we've all spent together has been invaluable. Like, I mean, when we started, when did it get over? I don't even honestly remember. So who's the prankster of the group? He's actually here. Vivek. This guy. No, This guy. This one. Urvashi thinks it's Vivek. Aftab thinks it's Mr. Indra Kumar. Induji. I think everyone is so nice on the set. Someone please give him an award. Ritesh. Hi. Hello. Hi. At one point of time, you wanted to steer clear of adult comedies. Ji. Then you changed your mind. Ji. What made you change your? The script. Me. Me! Indra Kumar. Induji. I think my love for Indra Kumar is much more than my promises in life. Hi Ritesh, Aftab and Vivek over here. Hey, how are you, man? Hey. Good, how are अच्छा you? लग रहा है, दाढ़ी नहीं किया है तूने. My question to you three is, do you think there can ever be a saturation point for you in this genre? Of course there can be. About 15, 20 years from now. No, there can be, but the idea is that I think
everyone does realize it while you're doing a film that, okay, fine, there could be a saturation point. But when you have something new to offer, there's new humor. And that's what I think Masti 3 or Great Grand Masti offers, because it's a naughty comedy, but in a horror space. So I think that's an interesting space that I don't think any other film in India has been made on this kind of space, and it's great to explore. So there's no saturation in this film for sure. And even I'd like to add to that I mean, Grand Masti was a big success, and we're very appreciative of the kind of response we got from the audience. But all three of us felt, whenever we sat, we watched portions of the film. You know, we used to sit after the shoot was over. We used to watch edited scenes that had just been finished, and Induji and all of us used to sit and have dinner in the evening and watch the movie. And we kept feeling that the spirit of Great Grand Masti, the soul of Great Grand Masti, is a lot like the original Masti, where the humor quotient was extremely high, and there's a constantly entertaining story that kind of sucks you into the whole experience, into the whole film. So I think that's what makes Great Grand Masti a cool film. And to add on to that question, do you think the judgment by High Court right now, that when they said that the multiplex audience is mature enough to decide what kind of films they want to watch, that will give the producers and directors a creative liberty to explore new things in every particular genre, even in this thing? Absolutely, and we welcome that decision from the High Court. Kudos to them for allowing actual democracy and actual freedom. I mean, we're in an India where we're allowed to decide who rules the country, but can't decide what film we want to watch. So I'm totally for certification over censorship. And we're all hoping that that's what the next obvious step is going to be from the Information and Broadcasting Ministry. And they're pretty cool. I mean, we had some interaction with them, and they were very helpful and very supportive. So we have no complaints at all. हम लोग सोच रहे हैं वापस रीसेंसर के लिए भेज दें. We can add some more scenes. And there can be no saturation on sex comedies. So it will never be. And we'll keep on making it. But I would like to use this platform and thank Balaji for supporting us to make this picture and backing us. I want to thank my friend Anand Bhai, Markan Bhai here, who gave us full support to make this picture, who were with us. Without their Balaji and these guys' support, it would not have been possible. And above all, Ritesh, who had sworn that I will not do a sex comedy. But मेरा मासूम चेहरा देखकर he agreed. Me too. And हाँ, ये भी बिचारी आई पहली बार मिलने और मुझे देख के डर गई और भाग गई. 3 महीने तक सर, अक्सर लड़कियों के साथ ऐसा क्यों होता है? मेरी बीवी इधर बैठी है. Sorry, man. Sorry. ये आई, मैं बोला यार यही, जैसे मैंने कहा भूतनी के रोल में इससे बेटर कोई नहीं होगा, ये बहुत अच्छी दिखती है और इससे बेटर कोई नहीं हो सकता. बट फिर ये डर के भाग गई. फिर 3 महीने के बाद मैं इसको ट्रैक करता रहा. हमारे तुषार हीरा नंदानी साहब उनके पीछे पड़े रहे, सोनू साहब भी जानते हैं, और फाइनली इसको पकड़ के लाए, इसको कन्विंस किया कि भाई ये वल्गर पिक्चर नहीं है, ये थोड़ी सी वल्गर है. इतनी वल्गर नहीं जितनी आप सोच रही हैं, एंड लॉट मोर फनी है. फिर इनको फिर कहानी सुनाई और तब ये राजी हुई काम करने के लिए. और मैं ये आपको फ़ख्र से कहता हूँ कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एक बहुत कमाल की एक्ट्रेस के साथ मैंने काम किया है. फैंटास्टिक. ये तीनों तो माइंड ब्लोइंग है, लेकिन ये चौथी भी माइंड ब्लोइंग मिल गई. थैंक यू. और हमारी फिल्म में और 3 भी actresses हैं जो अभी present नहीं हैं, and we'd like to say that they were also fantastic to work with. They all did a great job. So my question is to Urvashi. Thank you so very much for all those kind words, and it's a very big thing for me. Thank you. Urvashi, this Yeah, side. there. I'm Karan Chabra from AVS. Thank you. So my question to you is, out of your 3 co-stars, choose one who is very great in real life, one who's very grand in his lifestyle, and one who does the most masti. Hey brother, this is not Coffee with Karan here. It's a press conference for Great Grand Masti. That's Putting a her masti on a question. spot. That's a masti. A good question, man. Good question. Thank you. What was your question, by the way? Choose one. Out of your 3 co-stars,
choose one who is very great in real life, Okay. one who lives life in a very grand style, Okay. and one who does the most masti. But all three of them are like same. What all characteristics you gave me. They all are great, and they all live their life in a grand way, and they all do loads of masti on set. She's not winning the hamper. right? Now you know she was Miss India twice. And we know she has a political career ahead. No. हेलो इंद्र कुमार जी से है मेरा सवाल वहाँ हाँ जी, दिख रहा है। आपने अपने पूरे करियर में एक से एक हिट फिल्म्स दिए हैं लेकिन आप मस्ती की ही सब सीक्वेंस बना रहे हैं इसकी कोई खास वजह है? अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक फिल्म अटेम्प्ट की थी, सुपर नानी। तो आपने देखा ना क्या हुआ। तो सर धमाल भी बनाई थी हम लोगों ने सीक्वल। अरे बाबा, लेकिन अभी इनका तो ग्रैंड मस्ती से सवाल था ना। हाँ नहीं कि ग्रैंड मस्ती के अलावा बोला ना आपने। हाँ तो अलावा तो वो थी ना अभी। तो मस्ती धमाल ये छोड़ के मैंने कुछ ट्राई किया, तो आपने देखा रिजल्ट क्या है। तो मैं बैक टू ग्रैंड मस्ती आ गया और मैंने जैसे कहा ना, रितेश को जाके मैंने कन्विंस किया कि तुझे ये फिल्म मेरे लिए करनी ही पड़ेगी मेरे दोस्त। तो मतलब आपके हिसाब से आज के टाइम में सीरियस मूवीज का कोई दौर ही नहीं है? नहीं है ना। अभी हो सकता है कि अभी जैसे अभी ये हमारी फिल्म आई निर्जा, लोगों को पसंद आई ना, तो ऐसा कोई जगह नहीं है। नहीं, हर एक के लिए जगह है। मोटे के लिए भी जगह है, दुबले के लिए भी है, अच्छे के लिए भी है, बुरे के लिए भी है। Yes, we'll take one last question. One last question. Hi, Indra from sir. there. I'm Sunil from Movie Talkies. I would like to ask you that last time when Grand Masti came, you enacted scenes for your actors. So did this time also happen the same? हाँ, Helping they pull my leg. You know They what? tell me कि हमको आप ये- परफॉर्म करके दिखाइए, ये और मैं भी picture कैरिड करते अवे ही हो खुद जाता हूँ और perform करने के परफॉर्म लिए। करता हूँ। ये फिल्म करते ही है ताकि खुद परफॉर्म करके दिखा सके। तो बोलते कि सर मैं नहीं नहीं तू रुक, पहले देख मैं कैसे कर रहा हूँ, ऐसा ही करना है तुझे। तो बट बाय फार हैविंग वर्कड a lot in comedy space and with some finest directors who understand humor very well, I have to say Induji is at least 10-15 times better actor than all of us put together. Yes, so I true. agree. Yes, he Agreed. is. We are not a patch on him when it comes to expressing a scene. In humor, there are a lot of spaces that you can take. And there's timing, there's pauses, and he can utilize everything with expressions. And I think that's brilliant. So thanks, Hi, Ritesh. Hi, this is Simrita from Filmikari. My question is to the director. This year, onto your left, please. Sorry. Yeah. Yeah. This year, we already saw two adult comedies, Masti Zade and Kya Cool Hai Hum. And this is the third installment in Masti. And you've already said there can be no saturation when it comes to adult comedies. But in the previous two movies this year, there were some scenes in the trailer that weren't a part of the movie. So that spoils the whole movie fun. So you think that will happen with Great Grand Masti? No. What we show in the trailer will be there in the film. Definitely. Yes, thank you so much. With that, we're going to end this round of questioning. Please give all of them a huge round of applause. She has one question. Oh, okay. Okay. Sorry, thank you, Ritesh. Yep. And congratulations for your second child. Oh, first thank of you. all. Yeah. So Rian is now 3 years old. So 10, yeah, I guess two. I two and a guess half. 3, 2.5, Years 2. You've done such great homework. Let me tell you, it's 1.5. Okay, he's 1.5 years old. So 10. I'm mind reading a question. About 10-15 years from now, when Rian grows up We leave and you he with the watches watches these films. movies, Yeah. what do you feel he's going to feel? And we also Isn't that what know you're the thinking? answer. Yeah. You know, you sound like insurance salesman. देखो सर 15 साल के बाद कुछ भी हो सकता है, आप ये पॉलिसी खरीद लो. It kind of sounds like that. Do you ever think what he'll feel like? I mean, if 10, 15 I'll let me years. tell you, when I do Before you're asking what he'll feel like before he's starring in Masti 21 or after? If he sees these kind of films, he's done. Okay, I'll tell you one thing. When I do films, I do it because it's important for me how I feel about the films. Okay? And like you said, I'm sure I'm an actor, I'm making movies, so Rian can watch, I think, 2 years from now, and some after 18 years. Yeah, so great. Let him watch them. Alright. If he likes them, fine. If he doesn't like them, that's also fine.
Yes, But perfect. I I'm think- thinking that every person will be an individual to decide for themselves. I'm not embarrassed about any of my work. Thank you. Yes, perfect. Good, Lovely. good.
सेट्स ऑफ भाभी जी घर में है? आई थिंक एक एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपीरियंस था क्योंकि ये इतना पॉपुलर शो है और इट्स ऑल अबाउट स्लाइट मस्ती। शो के अंदर भी मस्ती होती है, कैरेक्टर भी काफ़ी सारी मस्ती कर रहे हैं, थोड़े से नॉटी है और हमें ऐसा लगा कि यहाँ पर आना चाहिए। आई वांट टू थैंक द एंटायर प्रोडक्शन एंड द स्टार कास्ट कि इन्होंने हमें यहाँ पर आने का मौका दिया, हमें यहाँ पर बुलाया और ये सारे कैरेक्टर जो देश भर में इतने पॉपुलर हैं और आई थिंक सारा देश चाहे वो क्लास हो या मास हो इन कैरेक्टर्स उनकी सिचुएशन से कनेक्ट करता है and we are happy to be here that the team of Great Grand Masti is integrating with this team. सही पकड़े हैं। बहुत बढ़िया। तो विवेक, ऐसा लगता है आप इस सीरियल को फॉलो करते हैं? हाँ यार, मैं फ़ैन हूँ इनका। इन चारों ने ऐसा धमाका कर रखा है टेलीविज़न पर, खासकर जब लेट शूटिंग वूटिंग रैप अप होती है, आप घर आते हो 10 साढ़े 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे ही चलता है, 10:30 एट नाइट। आप चैनल फ्लिप ऑन करो और देखने का इतना मज़ा आता है एंड पे ये कि बहुत एंटरटेनिंग, लाइट और मतलब नॉर्मली ज़िंदगी में इतने सारे टेंशन और प्रॉब्लम रहते हैं और न्यूज़ चैनल ऑन करो तो मतलब और टेंशन दे देते हैं। वो टेंशन बांटने की दुकान बन गई है न्यूज़ चैनल। आई एम सॉरी आप लोगों के सामने कह रहा हूँ, बट आप एंटरटेनमेंट का काम करते हैं। बोलना आपके हाथ में, काटना उनके हाथ में। खचाक खचाक खचाक। बट कहते हैं कि औरतें जो होती हैं घर के सीरियल्स को ज़्यादा फॉलो करती हैं, आप करती हैं? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? सीरियल्स फॉलो करती हैं आप? ये कह रहे हैं कि आप इनके घर की औरत हैं। मतलब आप उसे रिप्रेजेंट करती हैं। जी, भाभी जी घर पे है इज़ लाइक आई मस्ट से कि एक ऐसा शो है जिसकी हाईएस्ट TRP रेट्स हैं और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर शो है कैरेक्टर्स की वजह से, जो ये एक्टिंग करते हैं उसकी वजह से। इन माई होल एंटायर फैमिली हर कोई बहुत पसंद करता है ये शो देखना। माई कज़न ब्रदर्स दे ऑल वॉच इट, लाइक दे आर इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, दे स्टिल प्रेफर वॉचिंग योर शो। तो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग द ग्रेट ग्रैंड मस्ती टीम एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू गाइस। मुझे बहुत अच्छा लगा और ये जान करके बहुत अच्छा लगा कि कितने आप सब आई मीन इतने अच्छे कलाकार हैं और इतना अच्छा शूट किया है। और आपको ये जान के भी अच्छी खुशी होगी कि पूरा हिंदुस्तान मस्ती करता है। जी हाँ। ओके रितेश, विवेक, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, पहले मस्ती थी, फिर ग्रैंड मस्ती, अब ग्रेट ग्रैंड मस्ती, तो हर मूवी के साथ लेवल जो है मस्तियों का वो शायद बढ़ता जा रहा है। आप लोगों की मस्तियों का उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, यही कहना चाहूँगा कि मस्ती खोर वही है और मस्ती नहीं है, तो हर फिल्म के साथ कुछ नई चीज़ करने की कोशिश करते हैं। इस बार मुझे लगता है ग्रेट ग्रैंड मस्ती सबसे ज़्यादा फ़नी फिल्म है। आई थिंक ग्रैंड मस्ती थोड़ी सी ज़्यादा नॉटी थी, ये थोड़ी ज़्यादा नॉटी है लेकिन फ़नी बहुत ज़्यादा है। आई थिंक दैट्स द बिग डिफरेंस, क्योंकि इसका जो प्लॉट है वो इतना हिलेरियस है कि 3 गबरू जवान निकल पड़ते हैं एक खूबसूरत लड़की को पटाने और उसको सेट करने के चक्कर में एक दूसरे को का पत्ता कटिंग शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को लटकाते हैं कि किसके हाथ लग जाए लॉटरी। और जब ऐन मौका आता है तब पता चलता है कि ये तो मतलब प्यासी चुड़ैल है, अत्याचारी आत्मा है। तो सब भागने लग जाते हैं कि इससे कैसे डॉज मारें और किसी और को कैसे फंसाया जाए, किसी और को बलि का बकरा कैसे बनाया जाए ताकि हम बच जाएं। तो ये जो सिचुएशन है ये इनहेरेंटली इतनी फ़नी है और इसे करने में बहुत मज़ा आया। But what is the reason for preponing the release date? क्योंकि लोग इतने उत्सुक थे पिक्चर देखने के लिए और हम बहुत उत्सुक थे पिक्चर रिलीज करने के लिए। टाइटल के साथ जाता है ना, कमिंग सूनर। But how is promotion going on? Is it all okay? Everything is fine. How's the response you've been getting from the people, your fans, your audiences? Response is fabulous. No, I think it's been great, and we are happy that जहाँ पर भी जा रहे हैं बात हो रही है, इंटीग्रेशन अच्छा हो रहा है, चाहे वो मीडिया हो चाहे चैनल्स हो, क्योंकि यही माध्यम है लोगों तक बात पहुँचाने का। एंड वी आर वेरी एक्साइटेड कि ये हमारी फिल्म का तीसरा पार्ट है एंड वी आर हैप्पी टू get it earlier. अंगूरी जी, आपको क्या लग रहा है? You are playing a character of Virgin Ghost in the movie. It is not seen before in Bollywood. It is new for audience. So what is your take on it? जी, ग्रेट ग्रैंड मस्ती इसलिए ही इंटरेस्टिंग है और जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया। अभी तक कभी आपको देखने को नहीं मिला होगा ये कैरेक्टर।
Yes, it's very challenging. अभी तक की जो भी मेरे career में, I mean, it's my third film, so I'm really excited, and I just can't wait to, you know that how, and to just know like how the people and the audiences react to it. But Ritesh, correct me if I'm wrong. It is also said that the movie has been pirated and is on the cell phone for each and everyone. So the release date is going to be moved. See, I'll tell you what. It's an issue that we won't like to comment right now. और इस विषय पर the production will release a statement soon that will answer all your questions. So, but it's like so much losses is happening to all the production houses. So many movies have been happening, but this is like who's the culprit for that? अंगूर जी, आपको हमारा प्रोमो कैसे लगा? Refer to my earlier बहुत ही answer. मजा आया, बहुत मजा आया हमारे बहुत promo मजा को। आया। हाँ, और थिएटरवा में जाएंगी देखने के लिए हमारा फिल्म? हम तो जरूर जाएंगे लड्डू के भैया के साथ और बड़बूती जी और अनीता जी को भी लेके जाएंगे। हाय हाय, क्या बात है, 4 टिकट तो बिक गए भाई। All the very 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 best. Thank you so much. अनीता जी, आपको कैसे लगा? मैं तो ये सोच रही हूँ कि मुझे लगता था कि हमारा ही शो नॉटी है, लेकिन आपने नॉटीनेस में हमको पीछे छोड़ दिया है। जैसे आपने कहा बड़े पर्दे की बड़ी मस्ती, तो ये बड़ी वाली मस्ती देखने के लिए तो डेफिनेटली जाना पड़ेगा। और जैसे कि आपकी फिल्म में एक चुड़ैल है, मैं भी अपने शो की चुड़ैल हूँ, ऐसा मेरे हस्बैंड समझते हैं। अभी नॉटीनेस से याद आया, ये जो 2 नॉटी हैं, आप बता दीजिए नॉटी जीज। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा आप दोनों के साथ डांस करके। जी धन्यवाद। हमने तो क्या डांस मैनेजर है बेसिकली, हम लोग मैनेज करते हैं डांस जी। और दूसरी बात है कि इट वाज रियली फन वर्किंग विद यू गाइस, बिकॉज हम लोग तो क्या है कि एक वी आर प्लेइंग ऑन अ होम ग्राउंड, बट विद रितेश एंड विवेक दे वर सो गुड, इट वाज रियली वी रियली एंजॉयड वर्किंग विद देम। Thank you, sir. Thank you. नॉटीनेस की बात हो रही, भाभियों के साथ आज आप लोगों ने कितना फ्लर्ट किया। विभूति और तिवारी तो करते ही रहते हैं, उन्हें कंपटीशन दिया, आज आपने फ्लर्ट नहीं, क्या है कि हमने चांस पे डांस किया। ये कंपटीशन हो नहीं सकती यहाँ पर। बात इसलिए क्योंकि अमर और मीत यहाँ पर अपनी बीवियों के बगैर आए हैं, तो फ्लर्ट करना थोड़ा और आसान होता है। ये तो एक दूसरे के सामने ही फ्लर्टिंग शुरू कर देते, तो इन हम पकड़ नहीं सकते इनको। ये माहिर है। हमारी फ्लर्टिंग ऐसी होती है कि आप पकड़ भी नहीं सकते कि आप फ्लर्ट कर क्या बात है सर जी, हम जैसे छू के निकल जाते हैं। भाई अमर और मीत को इनके पास ट्यूशन के लिए भेजना पड़ेगा। बिल्कुल, इधर आके ट्यूशन लेनी पड़ेगी। और हमने वैसे पकड़ने की कोशिश की आज, रितेश हमें और विवेक हमें डांस के स्टेप्स पकड़ाने की कोशिश कर रहे थे, हम भी नहीं पकड़ पा रहे थे। नहीं, आप लोगों ने बहुत अच्छा डांस किया। तो आज आप देखेंगे तो मालूम पड़ेगा, ऐसे बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। इन्होंने इतना अच्छा डांस किया कि इनकी वजह से आपको लगेगा कि हम कितने अच्छे डांसर हैं। हमने इनको महसूस कराया। और हमने इतना अच्छा डांस किया कि चुड़ैल सच में भाग गई। पहले बता देते, हम पहले डांस करते थे। थैंक यू। Firstly, big fans of all of you. Please give them all a huge round of applause. This is the amazing Masti trio. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you, sir. But we're missing something. We're missing something right now. I think that is the main essence of this thing. Something or someone? I think someone, no? Okay. I think Let me start. Why don't you take over? थैंक यू सो मच कि आप लोग सब यहाँ पर आज आए हो। आज एक बहुत ही अनोखा दिन है हमारे लिए, और मुझे याद है कि जब हमने मस्ती की शुरुआत 2003 में की थी, तब हम तीनों पर एक लड़की का भूत सवार था। और 2013 में जब हमने ग्रैंड मस्ती की, तब हम तीनों पे 3 लड़कियों का भूत सवार था। अरे लेकिन जब भी हमने मस्ती की है, कुछ ना कुछ हमेशा उल्टा हो जाता है। हाँ। अब देखते 2016 में क्या कांड करते हैं हम लोग। क्या बजर कांड क सर उधर देखिए सर। सर कंपनी का क। अच्छा, कंपनी क। कृष का, काल का क। अच्छा ठीक है यार, कंपनी का क। बजर दबा। बजर कहाँ है? वहां पर है बजर। But all three together. Come on. We are touching. हाँ, कनेक्शन में हाँ, चलिए। इलेक्ट्रिसिटी इधर से भेज रहा हूँ मैं, इधर से। रेडी? 1 2 Hey, just be careful. 1 2
फट रही है यार. 1, 2. दबाया दबाया दबाया. क्या हुआ यार? क्या हो रहा है? आप कौन? Hi, अच्छी. I'm Ragini. रागिनी MMS. MMS नहीं, SMS. Simple मगर sexy. और मैं यहाँ पे आई हूँ ताकि आप सब पे मस्ती का भूत चढ़े. Ladies and gentlemen, presenting to all of you, Great. Grand मस्ती. Thank you. Before we move on to, the media question answers and everything, sir, that one dialogue you know, I have an idea. We'd all love to see that. I love you, Nanda. He's actually Nanda ji, great sound, man. Thank you. superb. He's actually made that dialogue happen. Oh wow! But this time it's I have a great, grand idea. All right, now that we have all of these guys here, I think they deserve a huge round of applause. इनके लिए जोरदार तालियां. Fantastic. Fantastic. All right, so I'm going to ask Vivek also, how was the experience of working third? This is, I think now it's grander also than ever. Masti is grander than ever. How was the experience working on Great Grand Masti? It was great Grand Masti, man. It was great Grand Masti throughout the set. It was incredible fun during the shoot, and I just love these guys. I love working with them. They're like family to me. This whole team, this whole incredible. I love you too. I love you too. I love you too. And it was amazing. It was amazing, and we're really excited about Masti 4. Oops, cat out of the bag. Oops. Yeah, we will surely make Masti 4. Yes. Any ideas for the title? Later. So I'm going to ask sir, who was the naughtiest among all of these three? Hard to figure out. Yes, I'm going to ask Urvashi also. She's been very quiet. But how was the experience working with these three naughty boys here? Okay, first of all, thank you so very much to all the members of media and everyone present here. The experience was worthwhile. It is the most challenging character I've ever played till now. This is my third film. I'm so very excited and so thrilled. I'm so very thankful to the trio. Be it like Ritesh, Vivek, Aftab, all three of them are amazing co-actors, and they supported me in each and every scene, and I had a blast shooting for it. And my director especially, Indra Kumar, he's the captain of ship, and I have always adored as a childhood, all his films, be it like Beta, Man, and Dhamal, all these are my favorite films. And Masti has always been my favorite film, and somehow this is the first comedy genre which I'm attempting, and I just hope it turns out to be successful. Also my producer, Ashok Takeria, and everyone, I'm so sorry if I missed out on names. So thank you so much, Indra sir. You are amazing, and I cannot believe that without even, in just like a 5 minutes meeting, how were you able to select and give me such a significant role in the film? I want to ask you, I mean, what made you select me, because there was thousands and thousands of girls. इसको देखते ही मुझे लगा कि भूतनी तो यही है. But प्यारी भूतनी. Yeah, Inder ji, I have to ask you,
Was she so polite on set also? She's a very polite bhutya, otherwise. एक्चुअली बट जब अपने रूप में आती तब देखना. Yes, some more questions. Inder, what is the reason behind not changing the male star cast, but we have the female star cast being कौन changed पूछ for रहा है? all? कौन सवाल पूछ क्या रहा है? है? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? कौन है? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? कहाँ है? किधर है वो? What do you mean? Why should they change? What's your problem, कौन bro? है? अच्छा, बैठ के सुसु करने वाले. हम पे क्यों हग रहे हो? Sir, please answer. हाँ जी. क्या क्वेश्चन था भूल गया मैं. अच्छा है सर, अच्छा है, अच्छा है. Okay, next question. एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन था. वेरी गुड, वेरी गुड. अभी हमारी तारीफ होगी शायद. क्या है कि हाँ वो दो माइक. आफ्ताब, रितेश, विवेक. ग्रैंड मस्ती. क्या है कि ग्रेट. लड़कियां हर टाइम चेंज होती है बिकॉज वो सब एज हो जाती है, बट ये मेरे तीनों एजलेस हैं. कौले आज भी एकदम माइंड ब्लोइंग. ऐसा लग रहा है अभी ओवन से निकाले हैं. Vivek, a question for you. Yes, where is this coming from? There only, yeah. Vivek bhai, question. Vivek, a question for you. You know, in the month of October last year, when the shooting of Grand Masti was on in Mehboob Studio, you had a very special visitor, that is Salman Khan. Salman met Aftab, Ritesh, and even Urvashi, but we didn't see him meeting you. What was the reason? Is all well? Friends again? He wasn't there that time, so Yeah. it's okay, right? Oh, he was there. Everyone saw us. The media was there. You saw? Of course. हाँ. आपकी कोई विशेष टिप्पणी? नहीं, क्योंकि 14 साल से तो मैं ये सवाल सुन रहा हूँ. अलग अलग रूप में. अगर किसी और को आंसर करना है तो कर दो. मैंने बहुत बार आंसर कर दिए ये. Anybody has any interesting? Can I please say something? It's between two individuals. I don't think we should interfere. Yes, and let's keep it to the film I think also, let's right? keep it to the film. Let's talk about the film. I mean, and it's Great about the Grandmaster. film. This is not about the film. You This wish is it about would two be. individuals. You wish it would be. It's more about your bite, but it's okay. Okay. Anyway, Thanks any for more your questions? How easy? Do you see him doing anything else? Ever? I was scared when you asked that question. What is he doing in this poster? I was scared for you. I swear. I mean, I love him, but I was scared for No, you. I think it's because the script is written so well, and every line that you say is out of innocence. So if you can portray innocence, even if it is, it has a double meaning or it has a certain naughtiness, I think it's palatable. So I think we tried to maintain a certain kind of innocence in the characters that we portray while doing a naughty comedy. Please don't ask us serious questions. ये please record करके हम लोगों को दे देना. आगे बहुत काम आने वाले. I know. ये answers. Ritesh, I have a question. Nothing at all. I think he spoke for all three of us. Yeah. And also, he's very good at mouthing dialogues. And also, Mr. Indra Kumar said, no, we are growing younger every year. So we look more innocent when we do such things. So Show them your innocent face, Fafu. Ritesh, Ji. I have a question for you. Here. Sorry, yes, sir. Ritesh, like we all know, in Marathi also you made a film last year and you became quite a popular, like everyone loved your performance and all. So now when you like make a movie which has such adult content and all, आपको लगता है कि आपकी मराठी audience जो है वो एक like disappoint हो जाएंगी कि आपने एक ऐसा adult movie किया? No, I don't think so, because that released next year after Grand Masti. मुझे लगता है कि as an actor, I get an opportunity to various kind of genres, and adult or naughty comedy being one of them. So I don't think I look down upon any genre for that matter. And I'm happy that that Grand Masti was a successful film, and that's the reason we are coming back with Great Grand Masti. And I'm happy that Lay Bhari was successful. And you know, I got a chance to do Ek Villain, which was completely different. That was also did well. So I'm okay. I guess audiences have been very kind towards me, and I thank them all. Thank you. And to add to that, I mean, just to clarify the air, I mean, Great Grand Masti is a family film. इसे देखने के बाद हिंदुस्तान में families बढ़ेंगी. Vivek, I have a question for you.
Vivek, like पिछले कई सालों से we have not seen you like associated with a big banner. Like everyone who comes in the industry who they want to work with a big banner like Dharma, for example, or Yash Raj, but would we see you working with them with such? I big just banners? finished a film with a big banner called Maruti and Balaji. And it's going to release on the 22nd of July. It's called Great Grand Masti. And also did a big banner film with my buddy here for Yash Raj called Bank Chor, which is releasing in October. And yeah, I'm having a good time. Hi, Ritesh. Hello. Yes. My question is for you. What do you think about Urta Punjab being leaked and their copies being sold outside Churchgate station? First of all, it's extremely sad that this thing happens to us as an industry. And any leaks, any kind of piracy hurts, and we bleed the maximum because if I think it's important for even the audience to respect the fact that one shouldn't support any kind of piracy. Having said that, I think the team Urta Punjab have done a great job trying to stop it. And if it is, as you say, that it's available outside Churchgate, please click a picture and send it to Mumbai Police. It's important. So it's up to you. You can do it. If you know it, tweet a picture and say CP Mumbai or Mumbai Police. Here it's available. Help us. So Yes, I think that's pretty cool, man. Thank you. Okay, I'm going to ask the boys here. Okay, all the boys. Tell me one memorable incident on the film that on Great Grand Masti that will make it epic. Fafu. I'm actually terrible with all this, so I'll give it to him. No, I think interestingly, when this film was narrated to me, we all were sitting and toying with the idea, okay, if Induji said, we've cracked an idea, and let's do this film. I think the fact that it's about a ghost in their life, and that changes everything. कि पहले हम लड़कियों के पीछे होते थे, अब लड़की हमारे पीछे हम भाग रहे. So it's a reverse thing in the entire film, and I think that was unique. And while shooting that, there were many things that happened. I mean, there are so many anecdotes, to be honest, because I can't say one day was better than the other, because every minute that we've all spent together has been invaluable. Like, I mean, when we started, when did it get over? I don't even honestly remember. So who's the prankster of the group? He's actually here. Vivek. This guy. No, this guy. This one. Urvashi thinks it's Vivek. Aftab thinks it's Mr. Indra Kumar. Induji. I think everyone is so nice on the set. Someone please give him an award. Ritesh. Hi. Hello. Hi. At one point of time, you wanted to steer clear of adult comedies. Ji. Then you changed your mind. Ji. What made you change your? The script. Me. Me. Indra Kumar. Induji. I think my love for Indra Kumar is much more than my promises in life. Hi Ritesh, Aftab and Vivek over here. Hey, how are you, man? Good, how are you? अच्छा लग रहा है. दाढ़ी नहीं किया इसने. My question to you three is, do you think there can ever be a saturation point for you in this genre? Of course. Of course there can be. About 15, 20 years from now. No, there can be, but the idea is that I think everyone does realize it while you're doing a film that, okay, fine, there could be a saturation point. But when you have something new to offer, there's new humor. And that's what I think Masti 3 or Great Grand Masti offers, because it's a naughty comedy, but in a horror space. So I think that's an interesting space that I don't think any other film in India has been made on this kind of space. And it's great to explore. So there's no saturation in this film for sure. And even I'd like to add to that I mean, Grand Masti was a big success, and we're very appreciative of the kind of response we got from the audience. But all three of us felt, whenever we sat, we watched portions of the film. We used to sit after the shoot was over. We used to watch edited scenes that had just been finished, and Induji and all of us used to sit and have dinner in the evening and watch the movie. And we kept feeling that the spirit of Great Grand Masti, the soul of Great Grand Masti, is a lot like the original Masti, where the humor quotient was extremely high, and there's a constantly entertaining story that kind of sucks you into the whole experience, into the whole film. So I think that's what makes Great Grand Masti a cool film. And to add on to that question, do you think the judgment by High Court right now
that when they said that the multiplex audience is mature enough to decide what kind of films they want to watch, that will give the producers and directors a creative liberty to explore new things in every particular genre, even in this thing. Absolutely, and we welcome that decision from the High Court. Kudos to them for allowing actual democracy and actual freedom. I mean, we're in an India where we're allowed to decide who rules the country, but can't decide what film we want to watch. So I'm totally for certification over censorship, and we're all hoping that that's what the next obvious step is going to be from the Information and Broadcasting Ministry. And they're pretty cool. I mean, we had some interaction with them, and they were very helpful and very supportive. So we have no complaints at all. हम लोग सोच रहे हैं वापस रीसेंसर के लिए भेज दें. We can add some more scenes. And there can be no saturation on sex comedies. So it will never be, and we'll keep on making it. But I would like to use this platform and thank Balaji for supporting us to make this picture and backing us. I want to thank my friend Anand Bhai, Markan Bhai here, who gave us full support to make this picture, who were with us. Without their Balaji and these guys' support, it would not have been possible. And above all, Ritesh, who had sworn that I will not do a sex comedy, but मेरा मासूम चेहरा देखकर he agreed. And हाँ, ये भी बेचारी आई पहली बार मिलने और मुझे देख के डर गई और भाग गई. 3 महीने तक सर अक्सर लड़कियों के साथ ऐसा क्यों होता है? मेरी बीवी इधर बैठी है. सॉरी मैम, सॉरी. ये आई, मैं बोला यार यही, जैसे मैंने कहा भूतनी के रोल में इससे बेटर कोई नहीं होगा, ये बहुत अच्छी दिखती है और इससे बेटर कोई नहीं हो सकता. बट फिर ये डर के भाग गई. फिर 3 महीने के बाद मैं इसको ट्रैक करता रहा. हमारे तुषार हीरा नंदानी साहब उनके पीछे पड़े रहे, सोनू साहब भी जानते हैं, और फाइनली इसको पकड़ के लाए, इसको कन्विंस किया कि भाई ये वल्गर पिक्चर नहीं है, ये थोड़ी सी वल्गर है. इतनी वल्गर नहीं जितनी आप सोच रही हैं, एंड लॉट मोर फनी है. फिर इनको फिर कहानी सुनाई और तब ये राजी हुई काम करने के लिए. और मैं ये आपको फ़ख्र से कहता हूँ कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एक बहुत कमाल की एक्ट्रेस के साथ मैंने काम किया है. फैंटास्टिक. ये तीनों तो माइंड ब्लोइंग है, लेकिन ये चौथी भी माइंड ब्लोइंग मिल गई. थैंक यू. और हमारी फिल्म में और 3 भी एक्ट्रेसेस हैं जो अभी प्रेजेंट नहीं है, एंड we'd like to say that they were also fantastic to work with. They all did a great job. So my question is to Urvashi. Thank you so very much for all those kind words, and it's a very big thing for me. Thank you. Urvashi, this side. There. I'm Karan Chabra from AVS. Thank you. So my question to you is, out of your 3 co-stars, choose one who is very great in real life, one who's very grand in his lifestyle, and one who does the most masti. Hey brother, this is not Coffee with Karan here. It's a press conference for Great Grand Masti. That's Putting a her masti on a question. spot. That's a masti. But a good question, man. Good question. Thank you. What was your question, by the way? Choose one out of your 3 co-stars. Okay. Choose one who is very great in real life, Okay. one who lives life in a very grand style, Okay. and one who does the most masti. But all 3 of them are like same. What all characteristics you gave me. They all are great, and they all live their life in a grand way, and they all do loads of masti on set. She's not winning the hamper. Now you know she was Miss India twice. Yes. And we know she has a political career ahead. No. हेलो, इंद्र कुमार जी से है मेरा सवाल. वहाँ. हाँ जी. आपने अपने पूरे करियर में एक से एक हिट फिल्म्स दिए हैं, लेकिन आप मस्ती की ही सब सीक्वेंस बना रहे हैं. इसकी कोई खास वजह है? अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक फिल्म अटेम्प्ट की थी, सुपर नानी. तो आपने देखा ना क्या हुआ. तो सर धमाली बनाई थी हम लोगों ने सीक्वल. अरे बाबा, लेकिन अभी इनका तो ग्रैंड मस्ती से सवाल था ना. हाँ नहीं, कि ग्रैंड मस्ती के अलावा बोला ना आपने. हाँ तो अलावा तो वो थी ना अभी. तो मस्ती धमाल ये छोड़ के मैंने कुछ ट्राई किया, तो आपने देखा रिजल्ट क्या है. तो मैं बैक टू ग्रैंड मस्ती आ गया, और मैंने जैसे कहा ना रितेश को जाके मैंने कन्विंस किया कि तुझे ये फिल्म मेरे लिए करनी ही पड़ेगी मेरे दोस्त.
तो मतलब आपके हिसाब से आज के टाइम में सीरियस मूवीज का कोई दौर ही नहीं है? नहीं है ना, अभी हो सकता है कि अभी जैसे अभी ये हमारी फिल्म आई नीरजा, लोगों को पसंद आई ना, तो ऐसा कोई जगह नहीं है, नहीं हर एक के लिए जगह है, मोटे के लिए भी जगह है, दुबले के लिए भी है, अच्छे के लिए भी है, बुरे के लिए भी है. Yes, we'll take one last question. One last question. Hi, from there. I'm Sunil from Movie Talkies. I would like to ask you that last time when Grand Masti came, you enacted scenes for your actors. So did this time also happen the same? हाँ, they pull my leg. You know They what? tell me कि हमको आप परफॉर्म करके दिखाइए, और मैं भी कैरिड अवे हो जाता हूँ और परफॉर्म करता हूँ. ये फिल्म करते ही है ताकि खुद परफॉर्म करके दिखा सके. तो बोलते कि सर मैं नहीं तू रुक, पहले देख मैं कैसे कर रहा हूँ, ऐसा ही करना है तुझे. तो but by far having worked a lot in comedy space and with some finest directors who understand humor very well, I have to say Induji is at least 10-15 times better actor than all of us put together. Yes, so Agree. true. Yes, he Agree. is. We are not a patch on him when it comes to expressing a scene. In humor, there are a lot of spaces that you can take, and there's timing, there's pauses, and he can utilize everything with expressions, and I think that's brilliant. So thanks, Hi, Ritesh. Hi, this is Samrita from Filmikari. My question is to the director. This year, onto your left, please. Sorry. Yeah. This year, we already saw two adult comedies, Masti Zade and Kya Cool Hai Hum. And this is the third installment in Masti. And you've already said there can be no saturation when it comes to adult comedies. But in the previous two movies this year, there were some scenes in the trailer that weren't a part of the movie. So that spoils the whole movie fun. So you think that will happen with Great Grand Masti? No. What we show in the trailer will be there in the film. Definitely. Yes, thank you so much. With that, we're going to end this round of questioning. Please give all of them a huge round of applause. She has one question. Oh, okay. Okay. Sorry, thank you, Ritesh. Yep. And congratulations for your second child. Oh, thank you. Yeah. So Rian is now 3 years old. So 10, yeah, I guess two. I two and a guess half. 3, 2.5, Years 2. You've done such great homework. Let me tell you, it's 1.5. Okay, he's 1.5 years old. So 10. I'm mind reading a question. About 10-15 years from now, when Rian grows up Will he be and able he to watch watches his these films? movies, Yeah. what do you feel he's going to feel? And we also Isn't that what know you're the thinking? answer. Yeah. You know, you sound like insurance salesman. देखो सर 15 साल के बाद कुछ भी हो सकता है, आप ये पॉलिसी खरीद लो. It kind of sounds like that. Do you ever think what he'll feel like? I mean, if 10, 15 I'll let me tell you, when I do Before you're asking what he'll feel like before he's starring in Masti 21 or after? if he sees these kind of films he's done. Okay, I'll tell you one thing. When I do films, I do it because it's important for me how I feel about the films. Okay? And like you said, I'm sure I'm an actor, I'm making movies, so Rian can watch, I think, 2 years from now, and some after 18 years. Yeah, so great. Let him watch them. If he likes them, fine. If he doesn't like them, that's also fine. Yes, But perfect. I'm thinking that every person will be an individual to decide for themselves. I'm not embarrassed about any of my work. Thank you. Yes, perfect. Good, Lovely. good.
on sets of भाभी जी घर में है? आई थिंक एक एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपीरियंस था क्योंकि ये इतना पॉपुलर शो है और इट्स ऑल अबाउट स्लाइट मस्ती। शो के अंदर भी मस्ती होती है, कैरेक्टर भी काफ़ी सारी मस्ती कर रहे हैं, थोड़े से नॉटी है और हमें ऐसा लगा कि यहाँ पर आना चाहिए। आई वांट टू थैंक द एंटायर प्रोडक्शन एंड द स्टार कास्ट कि इन्होंने हमें यहाँ पर आने का मौका दिया, हमें यहाँ पर बुलाया और ये सारे कैरेक्टर जो देश भर में इतने पॉपुलर हैं और आई थिंक सारा देश चाहे वो क्लास हो या मास हो इन कैरेक्टर्स उनकी सिचुएशन से कनेक्ट करता है। And we are happy to be here, that the team of Great Grand Masti is integrating with this team. सही पकड़े हैं। बहुत बढ़िया। तो विवेक ऐसा लगता है आप इस सीरियल को फॉलो करते हैं? हाँ यार, मैं फ़ैन हूँ इनका। इन चारों ने ऐसा धमाका कर रखा है टेलीविज़न पर, खासकर जब लेट शूटिंग वूटिंग रैप अप होती है, आप घर आते हो 10 साढ़े 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे ही चलता है, 10:30 एट नाइट। आप चैनल फ्लिप ऑन करो और देखने का इतना मज़ा आता है एंड पे ये कि बहुत एंटरटेनिंग, लाइट और मतलब नॉर्मली ज़िंदगी में इतने सारे टेंशन और प्रॉब्लम रहते हैं और न्यूज़ चैनल ऑन करो तो मतलब और टेंशन दे देते हैं। वो टेंशन बांटने की दुकान बन गई है न्यूज़ चैनल। आई एम सॉरी आप लोगों के सामने कह रहा हूँ, बट आप एंटरटेनमें का काम करते हैं। बोलना आपके हाथ में, काटना उनके हाथ में। खचाक। बट कहते हैं कि औरतें जो होती हैं उनके सीरियल्स को ज़्यादा फॉलो करती हैं, आप करती हैं? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? सीरियल्स फॉलो करती हैं आप? ये कह रहे हैं कि आप इनके घर की औरत हैं। मतलब आप उसे रिप्रेजेंट करती हैं। जी, भाभी जी घर पे है इज़ लाइक आई मस्ट से कि एक ऐसा शो है जिसकी हाईएस्ट TRP रेट्स हैं और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर शो है कैरेक्टर्स की वजह से, जो ये एक्टिंग करते हैं उसकी वजह से। इन माई होल एंटायर फैमिली हर कोई बहुत पसंद करता है ये शो देखना। माई कज़न ब्रदर्स दे ऑल वॉच इट, लाइक दे आर इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, दे स्टिल प्रेफर वॉचिंग योर शो। तो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग द ग्रेट ग्रैंड मस्ती टीम and I'm extremely thankful to you guys. मुझे बहुत अच्छा लगा और ये जान करके बहुत अच्छा लगा कितने आप सब इतने अच्छे कलाकार हैं और इतना अच्छा शूट किया हमने। और आपको ये जान के भी अच्छी खुशी होगी कि पूरा हिंदुस्तान मस्ती करता है। जी हाँ। ओके रितेश, विवेक, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, पहले मस्ती थी, फिर ग्रैंड मस्ती, अब ग्रेट ग्रैंड मस्ती, तो हर मूवी के साथ लेवल जो है मस्तियों का वो शायद बढ़ता जा रहा है। आप लोगों की मस्तियों का उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, यही कहना चाहूँगा कि मस्तीखोर वही है और मस्ती नहीं है, तो हर फिल्म के साथ कुछ नई चीज़ करने की कोशिश करते हैं। इस बार मुझे लगता है ग्रेट ग्रैंड मस्ती सबसे ज़्यादा फ़नी फिल्म है। आई थिंक ग्रैंड मस्ती थोड़ी सी ज़्यादा नॉटी थी, ये थोड़ी ज़्यादा नॉटी है लेकिन फ़नी बहुत ज़्यादा है। आई थिंक दैट्स द बिग डिफरेंस, क्योंकि इसका जो प्लॉट है वो इतना हिलेरियस है कि 3 गबरू जवान निकल पड़ते हैं एक खूबसूरत लड़की को पटाने और उसको सेट करने के चक्कर में एक दूसरे को का पत्ता कटिंग शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को लटकाते हैं कि किसके हाथ लग जाए लॉटरी। और जब ऐन मौका आता है तब पता चलता है कि ये तो मतलब प्यासी चुड़ैल है, अत्याचारी आत्मा है, तो सब भागने लग जाते हैं कि इससे कैसे डॉज मारें और किसी और को कैसे फंसाया जाए, किसी और को बलि का बकरा कैसे बनाया जाए ताकि हम बच जाएं। तो ये जो सिचुएशन है ये इनहेरेंटली इतनी फ़नी है और इसे करने में बहुत मज़ा आया। क्योंकि लोग इतने उत्सुक थे पिक्चर देखने के लिए और हम बहुत उत्सुक थे पिक्चर रिलीज़ करने के लिए। टाइटल के साथ जाता है ना, कमिंग सूनर। देख ही रहे हैं। Response is fabulous. No, I think it's been great, and we are happy that जहाँ पर भी जा रहे हैं बात हो रही है, इंटीग्रेशन अच्छा हो रहा है, चाहे वो मीडिया हो चाहे चैनल्स हो, क्योंकि यही माध्यम है लोगों तक बात पहुँचाने का। एंड वी आर वेरी एक्साइटेड कि ये हमारी फिल्म का तीसरा पार्ट है एंड वी आर हैप्पी टू get it earlier. अंगूरी जी, आपको क्या लग रहा है? You are playing a character of Virgin Ghost in the movie. It is not seen before in Bollywood. It is new for audience. So what is your take on it? जी, ग्रेट ग्रैंड मस्ती इसलिए ही इंटरेस्टिंग है और जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया, अभी तक कभी आपको देखने को नहीं मिला होगा ये कैरेक्टर।
Yes, it's very challenging. अभी तक की जो भी मेरे career में, I mean, it's my third film, so I'm really excited, and I just can't wait to, know that how and to just know like how the people and the audiences react to it. But Ritesh, correct me if I'm wrong. It is also said that the movie has been pirated and it's on the cell phone for each and everyone. So the release date is going to be See, I'll tell you what. It's an issue that we won't like to comment right now. और इस विषय पर the production will release a statement soon that will answer all your questions. So, but it's like so much losses is happening to all the production houses. So many movies have been happening, but this is like who's the culprit for that? अंगूरी जी, आपको हमारा प्रोमो कैसे लगा? Refer to my earlier बहुत ही answer. मजा आया, बहुत मजा आया हमारे बहुत प्रोमो मजा को। आया। हाँ, और थिएटरवा में जाएंगी देखने के लिए हमारा फिल्म? हम तो जरूर जाएंगे लड्डू के भैया के साथ और भरभूति जी और अनीता जी को भी लेके जाएंगे। हाय हाय, क्या बात है, 4 टिकट तो बिक गए भाई। All the very 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 best. Thank you so much. अनीता जी, आपको कैसे लगा? मैं तो ये सोच रही हूँ कि मुझे लगता था कि हमारा ही शो नॉटी है, लेकिन आपने नॉटीनेस में हमको पीछे छोड़ दिया है। जैसे आपने कहा बड़े पर्दे की बड़ी मस्ती, तो ये बड़ी वाली मस्ती देखने के लिए तो डेफिनेटली जाना पड़ेगा। और जैसे कि आपकी फिल्म में एक चुड़ैल है, मैं भी अपने शो की चुड़ैल हूँ, ऐसा मेरे हस्बैंड समझते हैं। अभी नॉटीनेस से याद आया, ये जो 2 नॉटी हैं, आप बता दीजिए नॉटी जीज। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा आप दोनों के साथ डांस करके। जी धन्यवाद। हमने तो क्या डांस मैनेजर है बेसिकली, हम लोग मैनेज करते हैं डांस जी। और दूसरी बात है कि इट वाज रियली फन वर्किंग विद यू गाइस, बिकॉज हम लोग तो क्या है कि एक वी आर प्लेइंग ऑन अ होम ग्राउंड, बट विद रितेश एंड विवेक दे वाज सो गुड, इट वाज रियली वी रियली एंजॉयड वर्किंग विद देम। थैंक यू। नॉटीनेस की बात हो रही, भाभी के साथ आज आप लोगों ने कितना फ्लर्ट किया, विभूति और तिवारी तो करते ही रहते हैं, उन्हें कंपटीशन दिया, आज आपने फ्लर्ट नहीं, क्या है कि हमने चांस पे डांस किया। ये कंपटीशन हो नहीं सकती यहाँ पर। बात इसलिए क्योंकि अमर और मीत यहाँ पर अपनी बीवियों के बगैर आए हैं, तो फ्लर्ट करना थोड़ा और आसान होता है। ये तो एक दूसरे के सामने ही फ्लर्टिंग शुरू कर देते, तो इन हम पकड़ नहीं सकते इनको। ये माहिर है। हमारी फ्लर्टिंग ऐसी होती है कि आप पकड़ भी नहीं सकते कि आप फ्लर्ट कर रहे क्या बात है सर जी, हम जैसे छू के निकल जाते हैं। भाई अमर और मीत को इनके पास ट्यूशन के लिए भेजना पड़ेगा। बिल्कुल, इधर आके ट्यूशन लेनी पड़ेगी। और हमने वैसे पकड़ने की कोशिश की, आज रितेश हमें और विवेक हमें डांस के स्टेप्स पकड़ाने की कोशिश कर रहे थे, हम भी नहीं पकड़ पा रहे थे। नहीं, आप लोगों ने बहुत अच्छा डांस किया। तो आज आप देखेंगे तो मालूम पड़ेगा, ऐसे बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। इन्होंने इतना अच्छा डांस किया कि इनकी वजह से आपको लगेगा कि हम कितने अच्छे डांसर हैं। हमने इनको महसूस कराया। और हमने इतना अच्छा डांस किया कि चुड़ैल सच में भाग गई। पहले बता देते, हम पहले ही डांस करते थे। थैंक यू so much। Firstly, big fans of all of you. Please give them all a huge round of applause. This is the amazing Masti trio. Thank you. Yeah. Thank you, sir. But we're missing something. We're missing something right now. I think that is the main essence of this thing. Something or someone? I think someone, no? Okay. I think let me start. Why don't you take over? Thank you so much कि आप लोग सब यहाँ पर आज आए हो। आज एक बहुत ही अनोखा दिन है हमारे लिए। और मुझे याद है कि जब हमने मस्ती की शुरुआत 2003 में की थी, तब हम तीनों पर एक लड़की का भूत सवार था। और 2013 में जब हमने ग्रैंड मस्ती की, तब हम तीनों पे 3 लड़कियों का भूत सवार था। अरे लेकिन जब भी हमने मस्ती की है, कुछ ना कुछ हमेशा उल्टा हो जाता है। हाँ। अब देखते 2016 में क्या कांड करते हैं हम लोग। क्या बजर कांड क सर उधर देखिए सर। सर कंपनी का क। अच्छा, कंपनी क। कृष का काल का क। अच्छा ठीक है यार, कंपनी का क। बजर दबा। बजर कहाँ है? वहां पर है। बजर। But all three together. Come on. We are touching. हाँ, कनेक्शन में हाँ, चलिए। इलेक्ट्रिसिटी इधर से भेज रहा हूँ मैं, इधर से। रेडी? 1 2 Hey, just be careful. 1 2
फट रही है यार. 1, 2. दबाया दबाया दबाया. क्या हुआ यार? क्या हो रहा है? आप कौन? Hi, I'm अच्छी- Ragini. Ragini, MMS. MMS नहीं, SMS. Simple मगर sexy. और मैं यहाँ पे आई हूँ ताकि आप सब पे मस्ती का भूत चढ़े. Ladies and gentlemen, presenting to all of you, Great. Grand मस्ती. Thank you. Before we move on to, the media question answers and everything, sir, that one dialogue you know, I have an idea. We all love to see that. I love you, Nanda. He's actually Nanda ji, great sound, man. Thank you. superb. He's actually made that dialogue happen. Oh wow! But this time it's I have a great, grand idea. All right, now that we have all of these guys here, I think they deserve a huge round of applause. इनके लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां. Fantastic. Fantastic. All right, so I'm going to ask Vivek also, how was the experience of working third? This is, I think now it's grander also than ever. Masti is grander than ever. How was the experience working on Great Grand Masti? It was great Grand Masti, man. It was great Grand Masti throughout the set. It was incredible fun during the shoot, and I just love these guys. I love working with them. They're like family to me. This whole team, this whole incredible. love me too. I love you too. I love you too. I love you too. And it was amazing. It was amazing, and we're really excited about Masti 4. Oops, cat out of the bag. Oops. Yeah, we will surely make Masti 4. Yes. Any ideas for the title? Later. So I'm going to ask sir, who was the naughtiest among all of these three? Hard to figure out. Yes, I'm going to ask Urvashi also. She's been very quiet. But how was the experience working with these three naughty boys here? Okay, first of all, thank you so very much to all the members of media and everyone present here. The experience was worthwhile. It is the most challenging character I've ever played till now. This is my third film. I'm so very excited and so thrilled. I'm so very thankful to the trio. Be it like Ritesh, Vivek, Aftab, all three of them are amazing co-actors and they supported me in each and every scene and I had a blast shooting for it. And my director especially, Indra Kumar, he's the captain of ship. And I have always adored as a childhood, all his films, be it like Beta, Man, and Dhamal. All these are my favorite films. And Masti has always been my favorite film. And somehow this is the first comedy genre which I'm attempting, and I just hope it turns out to be successful. Also my producer, Ashok Thakeria, and everyone, I'm so sorry if I missed out on names. So thank you so much, Indra sir. You are amazing, and I cannot believe that without even, in just like a 5 minutes meeting, how were you able to select and give me such a significant role in the film? I want to ask you, I mean, what made you select me? Because there was thousands and thousands of girls. इसको देखते ही मुझे लगा ये भूतनी तो यही है. But प्यारी भूतनी. Yeah, Inder ji, I have to ask you,
Was she so polite on set also? She's a very polite bhoot, yeah. Otherwise. एक्चुअली बट जब अपने रूप में आती तब देखना. Yes, some more questions. Inder, what is the reason behind not changing the male star cast, but we have the female star cast being कौन changed? पूछ रहा है? for कौन all- सवाल पूछ क्या रहा है? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? कौन है? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? कहाँ है? किधर है वो? What do you mean? किधर Why है? should they change? What's your problem, कौन dude? है? अच्छा, बैठ के सुसु मैं- करने वाले. हम पे क्यों हग रहे हो? Sir, please answer. हाँ जी. क्या क्वेश्चन था भूल गया मैं. अच्छा है सर, अच्छा है, अच्छा है. Okay, next question. एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन था. वेरी गुड, वेरी गुड. अभी हमारी तारीफ होगी शायद. क्या है कि हाँ वो दो माइक. आफ्ताब, रितेश, विवेक. ग्रैंड मस्ती. क्या है कि ग्रेट. लड़कियां हर टाइम चेंज होती है बिकॉज वो सब एज हो जाती है. बट ये मेरे तीनों एजलेस हैं. कौले आज भी एकदम माइंड ब्लोइंग. ऐसा लग रहा है अभी ओवन से निकाले हैं. Vivek, a question for you. Yes, where is this coming from? now? There only, yeah. Vivek bhai, question. Vivek, a question for you. In the month of October last year, when the shooting of Grand Masti was on in Mehboob Studio, you had a very special visitor, that is Salman Khan. Salman met Aftab, Ritesh, and even Urvashi, but we didn't see him meeting you. What was the reason? Is all well? Friends again? He wasn't there that time, so Yeah. it's okay, right? Oh, he was there. Everyone saw us. The media was Where there. you saw? Of course. हाँ. आपकी कोई विशेष टिप्पणी? नहीं, क्योंकि 14 साल से तो मैं ये सवाल सुन रहा हूँ अलग अलग रूप में. अगर किसी और को आंसर करना है तो कर दो. मैंने बहुत बार आंसर कर दिए ये. Anybody has any interesting? Can I please say something? It's between two individuals. I don't think we should interfere. Yes, and let's Okay? keep it to the film I think also, we'll right? keep it to the film. Let's talk about the film and it's Great about the Grandmother. film. This is not about the film. You This wish is it about would two be. individuals. You wish it would be. It's more about your bite, but it's okay. Okay. Anyway, Thanks any for more your questions? How easy? Do you see him doing anything else? Ever? I was scared when you asked that question, what is he doing in this poster? I was scared for you, I swear. I mean, I love him, but I was scared for No, you. I think it's because the script is written so well, and every line that you say is out of innocence. So if you can portray innocence, even if it is, it has a double meaning or it has a certain naughtiness, I think it's palatable. So I think we try to maintain a certain kind of innocence in the characters that we portray while doing a naughty comedy. Please don't ask us serious questions. ये प्लीज रिकॉर्ड करके हम लोगों को दे देना. आगे बहुत काम आने वाले. I know. ये आंसर्स. Ritesh, I have a question. Nothing at all. I think he spoke for all three of us. Yeah. And also, he's very good at mouthing dialogues. And also, Mr. Indra Kumar said, no, we are growing younger every year. So we look more innocent when we do such things. So Show them your innocent face, Fafu. Ritesh, Ji. I have a question for you. Here. Sorry, yes, sir. Ritesh, like we all know, in Marathi also you made a film last year and you became quite a popular. Like everyone loved your performance and all. So now when you like make a movie which has such adult content and all, आपको लगता है कि आपकी मराठी audience जो है वो एक like disappoint हो जाएंगी कि आपने एक ऐसा adult movie किया? No, I don't think so because that released next year after Grand Masti. मुझे लगता है कि as an actor I get an opportunity to various kind of genres and adult or naughty comedy being one of them. So I don't think I look down upon any genre for that matter. And I'm happy that that Grand Masti was a successful film, and that's the reason we are coming back with Great Grand Masti. And I'm happy that Lay Bhari was successful, and I got a chance to do Ek Villain, which was completely different. That was also did well. So I'm okay. I guess audiences have been very kind towards me, and I thank them all. Thank you. And to add to that, I mean, just to clarify the air, I mean, Great Grand Masti is a family film. इसे देखने के बाद हिंदुस्तान में families बढ़ेंगी. Vivek, I have a question for you. Vivek, like
पिछले कई सालों से we have not seen you like associated with a big banner. Like everyone who comes in the industry who they want to work with a big banner like Dharma, for example, or Yash Raj, but would we see you working with them with such? I just finished a film with a big banner called Maruti and Balaji, and it's going to release on the 22nd of July. It's called Great Grand Masti, and also did a big banner film with my buddy here for Yash Raj called Bank Chor, which is releasing in October, and yeah, I'm having a good time. Hi Ritesh. Hello. Yes. My question is for you. What do you think about Urta Punjab being leaked and their copies being sold outside Churchgate station? First of all, it's extremely sad that this thing happens to us as an industry. And any leaks, any kind of piracy hurts, and we bleed the maximum because if I think it's important for even the audience to respect the fact that one shouldn't support any kind of piracy. Having said that, I think the team Urta Punjab have done a great job trying to stop it. And if it is, as you say, that it's available outside Churchgate, please click a picture and send it to Mumbai Police. It's important. So it's up to you. You can do it. If you know it, tweet the picture and say, CP Mumbai or Mumbai Police, here it's available. Help us. So, Yes, I think that's pretty cool. Thank you. Okay, I'm going to ask the boys here. Okay, all the boys. Tell me one memorable incident on the film that, on Great Grand Masti that will make it epic. Fafu? I'm actually terrible with all this, so I'll give it to him. No, I think, interestingly, when this film was narrated to me, we all were sitting and toying with the idea, okay, if Induji said, we've cracked an idea, and let's do this film. I think the fact that it's about a ghost in their life, and that changes everything. कि पहले हम लड़कियों के पीछे होते थे, अब लड़की हमारे पीछे हम भाग रहे. So it's a reverse thing in the entire film, and I think that was unique. And while shooting that, there were many things that happened. I mean, there are so many anecdotes, to be honest, because I can't say one day was better than the other, because every minute that we all spent together has been invaluable. Like, I mean, when we started, when did it get over? I don't even honestly remember. So who's the prankster of the group? He's actually here. Vivek. This guy. No, this guy. This one. Urvashi thinks it's Vivek. Aftab thinks it's Mr. Indra Kumar. Induji. I think everyone is so nice on the set. Someone please give him an award. Ritesh. Hi. Hello. Hi. At one point of time, you wanted to steer clear of adult comedies. Ji. Then you changed your mind. Ji. What made you change your? The script. Me. Me. Indra Kumar. Induji. I think my love for Indra Kumar is much more than my promises in life. Hi Ritesh, Aftab and Vivek over here. Hey, how are you, man? Good, how are you? अच्छा लग रहा है, दाढ़ी नहीं किया इसने. My question to you three is, do you think there can ever be a saturation point for you in this genre? Of course there can be. About 15-20 years from now. There can be, but the idea is that I think everyone does realize it while you're doing a film that, okay, fine, there could be a saturation point. But when you have something new to offer, there's new humor. And that's what I think Masti 3 or Great Grand Masti offers, because it's a naughty comedy, but in a horror space. So I think that's an interesting space that I don't think any other film in India has been made on this kind of space. And it's great to explore. So there's no saturation in this film for sure. And even, I'd like to add to that, I mean, Grand Masti was a big success, and we're very appreciative of the kind of response we got from the audience. But all three of us felt, whenever we sat, we watched portions of the film. We used to sit after the shoot was over. We used to watch edited scenes that had just been finished, and Induji and all of us used to sit and have dinner in the evening and watch the movie. And we kept feeling that the spirit of Great Grand Masti, the soul of Great Grand Masti, is a lot like the original Masti, where the humor quotient was extremely high, and there's a constantly entertaining story that kind of sucks you into the whole experience, into the whole film. So I think that's what makes Great Grand Masti a cool film. And to add on to that question, do you think the judgment by High Court right now
that when they said that the multiplex audience is mature enough to decide what kind of films they want to watch, that will give the producers and directors a creative liberty to explore new things in every particular genre, even in this thing. Absolutely, and we welcome that decision from the High Court. Kudos to them for allowing actual democracy and actual freedom. I mean, we're in an India where we're allowed to decide who rules the country, but can't decide what film we want to watch. So I'm totally for certification over censorship, and we're all hoping that that's what the next obvious step is going to be from the Information and Broadcasting Ministry. And they're pretty cool. I mean, we had some interaction with them, and they were very helpful and very supportive. So we have no complaints at all. हम लोग सोच रहे वापस रीसेंसर के लिए भेज दें. We can add some more scenes. And there can be no saturation on sex comedies. So it will never be, and we'll keep on making it. But I would like to use this platform and thank Balaji for supporting us to make this picture and backing us. I want to thank my friend Anand Bhai, Markan Bhai here, who gave us full support to make this picture, who were with us. Without their Balaji and these guys' support, it would not have been possible. And above all, Ritesh, who had sworn that I will not do a sex comedy, but मेरा मासूम चेहरा देखकर he agreed. And हाँ, ये भी बिचारी आई पहली बार मिलने और मुझे देख के डर गई और भाग गई. 3 महीने तक सर अक्सर लड़कियों के साथ ऐसा क्यों होता है? मेरी बीवी इधर बैठी है. सॉरी मैम, सॉरी. ये आई, मैं बोला यार यही, जैसे मैंने कहा भूतनी के रोल में इससे बेटर कोई नहीं होगा, ये बहुत अच्छी दिखती है और इससे बेटर कोई नहीं हो सकता. बट फिर ये डर के भाग गई. फिर 3 महीने के बाद मैं इसको ट्रैक करता रहा. हमारे तुषार हीरा नंदानी साहब उनके पीछे पड़े रहे, सोनू साहब भी जानते हैं, और फाइनली इसको पकड़ के लाए, इसको कन्विंस किया कि भाई ये वल्गर पिक्चर नहीं है, ये थोड़ी सी वल्गर है. इतनी वल्गर नहीं जितनी आप सोच रही हैं, एंड लॉट मोर फनी. फिर इनको फिर कहानी सुनाई और तब ये राजी हुई काम करने के लिए. और मैं ये आपको फ़ख्र से कहता हूँ कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एक बहुत कमाल की एक्ट्रेस के साथ मैंने काम किया है. फैंटास्टिक. ये तीनों तो माइंड ब्लोइंग है, लेकिन ये चौथी भी माइंड ब्लोइंग मिल गई. हेलो, थैंक यू. और हमारी फिल्म में और 3 भी एक्ट्रेसेस हैं जो अभी प्रेजेंट नहीं है, एंड वीड लाइक टू से दैट they were also fantastic to work with. They all did a great job. So my question is to Urvashi. Thank you so very much for all those kind words, and it's a very big thing for me. Thank you. Urvashi, this side. There. I'm Karan Chabra from AVS. Thank you. So my question to you is, out of your 3 co-stars, choose one who is very great in real life, one who's very grand in his lifestyle, and one who does the most masti. Hey brother, this is not Coffee with Karan here. It's a press conference for Great Grand Masti. That's Putting a her masti on a question. spot. That's a masti. But, good question, man. Good question. Thank you. What was your question, by the way? Choose one out of your 3 co-stars. Okay. Choose one who is very great in real life, okay, one who lives life in a very grand style, okay, and one who does the most masti. But all 3 of them are like same. What all characteristics you gave me. They all are great, and they all live their life in a grand way. And they all do loads of masti on set. She's not winning the hamper. Now you know she was Miss India twice. Yes. And we know she has a political career ahead. No. हेलो, इंद्र कुमार जी से है मेरा सवाल. वहाँ. हाँ जी. आपने अपने पूरे करियर में एक से एक हिट फिल्म्स दिए हैं, लेकिन आप मस्ती की ही सब सीक्वेंस बना रहे हैं. इसकी कोई खास वजह? अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक फिल्म अटेम्प्ट की थी, सुपर नानी. तो आपने देखा ना क्या हुआ. तो सर धमाल ही बनाई थी हम लोगों ने सीक्वल. अरे बाबा, लेकिन अभी इनका तो ग्रैंड मस्ती से सवाल था ना. नहीं कि ग्रैंड मस्ती के अलावा बोला ना आपने. हाँ, तो अलावा तो वो थी ना अभी. तो मस्ती धमाल ये छोड़ के मैंने कुछ ट्राई किया, तो आपने देखा रिजल्ट क्या है. तो मैं बैक टू ग्रैंड मस्ती आ गया, और मैंने जैसे कहा ना, रितेश को जाके मैंने कन्विंस किया कि तुझे ये फिल्म मेरे लिए करनी ही पड़ेगी मेरे दोस्त.
तो मतलब आपके हिसाब से आज के टाइम में सीरियस मूवीज का कोई दौर ही नहीं है? नहीं है ना, अभी हो सकता है कि अभी जैसे अभी ये हमारी फिल्म आई नीरजा, लोगों को पसंद आई ना, तो ऐसा कोई जगह नहीं है, नहीं हर एक के लिए जगह है, मोटे के लिए भी जगह है, दुबले के लिए भी है, अच्छे के लिए भी है, बुरे के लिए भी है. Yes, we'll take one last question. Last question. Hi, from there. I'm Sunil from Movie Talkies. I would like to ask you that last time when Grand Masti came, you enacted scenes for your actors. So did this time also happen the same? हाँ, they pull my leg. You know They what? tell me कि हमको आप परफॉर्म करके दिखाइए, और मैं भी कैरिड अवे हो जाता हूँ और परफॉर्म करता हूँ. ये फिल्म करते ही है ताकि खुद परफॉर्म करके दिखा सके. तो बोलते कि सर मैं नहीं तू रुक, पहले देख मैं कैसे कर रहा हूँ, ऐसा ही करना है तुझे. तो but by far having worked a lot in comedy space and with some finest directors who understand humor very well, I have to say Induji is at least 10-15 times better actor than all of us put together. Yes, so true. Agree. Yes, he Agree. is. We are not a patch on him when it comes to expressing a scene. You know, in humor, there are a lot of spaces that you can take, and there's timing, there's pauses, and he can utilize everything with expressions, and I think that's brilliant. So thanks, Hi, Ritesh. Hi, this is Simrita from Filmikari. My question is to the director. This year, onto your left, please. Sorry. Yeah. This year, we already saw two adult comedies, Masti Zade and Kya Cool Hai Hum. And this is the third installment in Masti. And you've already said there can be no saturation when it comes to adult comedies. But in the previous two movies this year, there were some scenes in the trailer that weren't a part of the movie. So that spoils the whole movie fun. So you think that will happen with Great Grand Masti? No. What we show in the trailer will be there in the film. Definitely. Yes, thank you so much. With that, we're going to end this round of questioning. Please give all of them a huge round of applause. She has one question. Oh, okay. Okay. Sorry, thank you, Ritesh. Yep. And congratulations for your second child. Oh, first thank of you. all. Yeah. So Rian is now 3 years old. So 10, I guess two. I two and a guess half. 3, 2.5, Years 2. You've done such great homework. Let me tell you, it's 1.5. Okay, he's 1.5 years old. So 10. I'm mind reading a question. About 10-15 years from now, when Rian grows up leave you and with he the watches answers. these movies, Yeah. what do you feel he's going to feel? And we also Isn't that what know you're the thinking? answer. Yeah. You know, you sound like insurance salesman. देखो सर 15 साल के बाद कुछ भी हो सकता है, आप ये पॉलिसी खरीद लो. It kind of sounds like that. Do you ever think what he'll feel like? I mean, if 10, 15 I'll let me years- tell you, when I do Before you're asking what he'll feel like before he's starring in Masti 21 or after? If he sees these kind of films, he has done. Okay, that. I'll tell you one thing. When I do films, I do it because it's important for me how I feel about the films. Okay? And like you said, I'm sure I'm an actor, I'm making movies, so Rian can watch, I think, 2 years from now, and some after 18 years. Yeah, so great. Let him watch them. Alright. If he likes them, fine. If he doesn't like them, that's also fine. Yes, But perfect. I'm thinking that every person will be an individual to decide for themselves. I'm not embarrassed about any of my work. Thank you. Yes, perfect. Good, Lovely. good.
सेट्स ऑफ भाभी जी घर में है? आई थिंक एक एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये इतना पॉपुलर शो है और इट्स ऑल अबाउट स्लाइट मस्ती। शो के अंदर भी मस्ती होती है, कैरेक्टर भी काफ़ी सारी मस्ती कर रहे हैं, थोड़े से नॉटी है और हमें ऐसा लगा कि यहाँ पर आना चाहिए। आई वांट टू थैंक द एंटायर प्रोडक्शन एंड द स्टार कास्ट कि इन्होंने हमें यहाँ पर आने का मौका दिया, हमें यहाँ पर बुलाया और ये सारे कैरेक्टर जो देश भर में इतने पॉपुलर हैं और आई थिंक सारा देश, चाहे वो क्लास हो या मास हो, इन कैरेक्टर्स उनकी सिचुएशन से कनेक्ट करता है। And we are happy to be here, that the team of Great Grand Masti is integrating with this team. सही पकड़े हैं। बहुत बढ़िया। तो विवेक, ऐसा लगता है आप इस सीरियल को फॉलो करते हैं? हाँ यार, मैं फ़ैन हूँ इनका। इन चारों ने ऐसा धमाका कर रखा है टेलीविज़न पर, खासकर जब लेट शूटिंग वूटिंग रैप अप होती है, आप घर आते हो 10 साढ़े 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे ही चलता है, 10:30 एट नाइट। आप चैनल फ्लिप ऑन करो और देखने का इतना मज़ा आता है एंड पे ये कि बहुत एंटरटेनिंग, लाइट और मतलब नॉर्मली ज़िंदगी में इतने सारे टेंशन और प्रॉब्लम रहते हैं और न्यूज़ चैनल ऑन करो तो मतलब और टेंशन दे देते हैं। वो टेंशन बांटने की दुकान बन गई है न्यूज़ चैनल। आई एम सॉरी आप लोगों के सामने कह रहा हूँ, बट आप एंटरटेनमेंट का काम करते हैं। बोलना आपके हाथ में, काटना उनके हाथ में। खचाक। बट कहते हैं कि औरतें जो होती हैं घर के सीरियल्स को ज़्यादा फॉलो करती हैं, आप करती हैं? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? सीरियल्स फॉलो करती हैं आप? ये कह रहे हैं कि आप इनके घर की औरत हैं। मतलब आप उसे रिप्रेजेंट करती हैं। जी, भाभी जी घर पे है इज़ लाइक आई मस्ट से कि एक ऐसा शो है जिसकी हाईएस्ट TRP रेट्स हैं और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर शो है कैरेक्टर्स की वजह से, जो ये एक्टिंग करते हैं उसकी वजह से। इन माई होल इंटायर फैमिली हर कोई बहुत पसंद करता है ये शो देखना। माई कज़न ब्रदर्स दे ऑल वॉच इट, लाइक दे आर इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, दे स्टिल प्रेफर वॉचिंग योर शो। तो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग द ग्रेट ग्रैंड मस्ती टीम एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू गाइस। मुझे बहुत अच्छा लगा और ये जान करके बहुत अच्छा लगा कि कितने आप सब आई मीन इतने अच्छे कलाकार हैं और इतना अच्छा शूट किया है हमने। और आपको ये जान के भी अच्छी खुशी होगी कि पूरा हिंदुस्तान मस्ती करता है। जी हाँ। ओके रितेश, विवेक, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, पहले मस्ती थी, फिर ग्रैंड मस्ती, अब ग्रेट ग्रैंड मस्ती, तो हर मूवी के साथ लेवल जो है मस्तियों का वो शायद बढ़ता जा रहा है। आप लोगों की मस्तियों का उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, यही कहना चाहूँगा कि मस्ती खोर वही है और मस्ती नहीं है, तो हर फिल्म के साथ कुछ नई चीज़ करने की कोशिश करते हैं। इस बार मुझे लगता है ग्रेट ग्रैंड मस्ती सबसे ज़्यादा फ़नी फिल्म है। आई थिंक ग्रैंड मस्ती थोड़ी सी ज़्यादा नॉटी थी, ये थोड़ी ज़्यादा नॉटी है लेकिन फ़नी बहुत ज़्यादा है। आई थिंक दैट्स द बिग डिफरेंस, क्योंकि इसका जो प्लॉट है वो इतना हिलेरियस है कि 3 गबरू जवान निकल पड़ते हैं एक खूबसूरत लड़की को पटाने और उसको सेट करने के चक्कर में एक दूसरे को का पत्ता कटिंग शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को लटकाते हैं कि किसके हाथ लग जाए लॉटरी। और जब ऐन मौका आता है तब पता चलता है कि ये तो मतलब प्यासी चुड़ैल है, अत्याचारी आत्मा है। तो सब भागने लग जाते हैं कि इससे कैसे डॉज मारें और किसी और को कैसे फंसाया जाए, किसी और को बलि का बकरा कैसे बनाया जाए ताकि हम बच जाएं। तो ये जो सिचुएशन है ये इनहेरेंटली इतनी फ़नी है और इसे करने में बहुत मज़ा आया। But what is the reason for preponing the release date? क्योंकि लोग इतने उत्सुक थे पिक्चर देखने के लिए और हम बहुत उत्सुक थे पिक्चर रिलीज़ करने के लिए। But टाइटल के साथ जाता है ना, कमिंग सूनर। But how is promotion going on? Is it all okay? Everything is fine. How's the response you've been getting from the people, your fans, your audiences? Response is fabulous. No, I think it's been great, and we are happy that जहाँ पर भी जा रहे हैं बात हो रही है, इंटीग्रेशन अच्छा हो रहा है, चाहे वो मीडिया हो चाहे चैनल्स हो, क्योंकि यही माध्यम है लोगों तक बात पहुँचाने का। एंड वी आर वेरी एक्साइटेड कि ये हमारी फिल्म का तीसरा पार्ट है एंड वी आर हैप्पी टू get it earlier. अंगूरी जी, आपको क्या लग रहा है? You are playing a character of Virgin Ghost in the movie. It is not seen before in Bollywood. It is new for audience. So, what is your take on it? जी, ग्रेट ग्रैंड मस्ती इसलिए ही इंटरेस्टिंग है और जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया। अभी तक कभी आपको देखने को नहीं मिला होगा ये कैरेक्टर।
Yes, it's very challenging. अभी तक की जो भी मेरे career में, I mean, it's my third film, so I'm really excited, and I just can't wait to, you know that how and to just know like how the people and the audiences react to it. But Ritesh, correct me if I'm wrong. It is also said that the movie has been pirated and it's on the cell phone for each and everyone. So the release date is going to be posted. See, I'll tell you what. It's an issue that we won't like to comment right now. और इस विषय पर the production will release a statement soon that will answer all your questions. So, but it's like so much losses is happening to all the production houses. So many movies have been happening, but this is like who's the culprit for that? अंगूरी जी, आपको हमारा प्रोमो कैसे लगा? Refer to my earlier बहुत ही answer. मजा आया, बहुत मजा आया हमारे बहुत प्रोमो मजा को। आया। हाँ, और थिएटरों में जाएंगी देखने के लिए हमारा फिल्म? हम तो जरूर जाएंगे लड्डू के भैया के साथ और बरबूती जी और अनीता जी को भी लेके जाएंगे। हाय हाय, क्या बात है, 4 टिकट तो बिक गए भाई। All the very 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 best. Thank you so much. अनीता जी, आपको कैसा लगा? मैं तो ये सोच रही हूँ कि मुझे लगता था कि हमारा ही शो नॉटी है, लेकिन आपने नॉटीनेस में हमको पीछे छोड़ दिया है। जैसे आपने कहा बड़े पर्दे की बड़ी मस्ती, तो ये बड़ी वाली मस्ती देखने के लिए तो डेफिनेटली जाना पड़ेगा। और जैसे कि आपकी फिल्म में एक चुड़ैल है, मैं भी अपने शो की चुड़ैल हूँ, ऐसा मेरे हस्बैंड समझते हैं। अभी नॉटीनेस से याद आया, ये जो 2 नॉटी हैं, आप बता दीजिए नॉटी जीज। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा आप दोनों के साथ डांस करके। जी धन्यवाद। हमने तो क्या डांस मैनेजर है बेसिकली, हम लोग मैनेज करते हैं डांस जी। और दूसरी बात है कि इट वाज रियली फन वर्किंग विद यू गाइस, बिकॉज हम लोग तो क्या है कि एक वी आर प्लेइंग ऑन अ होम ग्राउंड, बट विद रितेश एंड विवेक दे वाज सो गुड, इट वाज रियली वी एंजॉयड वर्किंग विद देम। Thank you. नॉटीनेस की बात हो रही भाभी के साथ, आज आप लोगों ने कितना फ्लर्ट किया, विभूति और तिवारी तो करते ही रहते हैं, उन्हें कंपटीशन दिया, आज आपने फ्लर्ट नहीं, क्या है कि ये चांस पे डांस किया। ये कंपटीशन हो नहीं सकती यहाँ पर। बात इसलिए क्योंकि अमर और मीत यहाँ पर अपनी बीवियों के बगैर आए हैं, तो फ्लर्ट करना थोड़ा और आसान होता है। ये तो एक दूसरे के सामने ही फ्लर्टिंग शुरू कर देते, तो इन हम पकड़ नहीं सकते इनको, ये माहिर है। हमारी फ्लर्टिंग ऐसी होती है कि आप पकड़ भी नहीं सकते कि हम फ्लर्ट कर क्या बात है सर जी, हम जैसे छू के निकल जाते हैं। भाई अमर और मीत को इनके पास ट्यूशन के लिए भेजना पड़ेगा। बिल्कुल, इधर आके ट्यूशन लेनी पड़ेगी। और हमने वैसे पकड़ने की कोशिश की, आज रितेश हमें और विवेक हमें डांस के स्टेप्स पकड़ाने की कोशिश कर रहे थे, हम भी नहीं पकड़ पा रहे थे। नहीं, आप लोगों ने बहुत अच्छा डांस किया, तो आज आप देखेंगे तो मालूम पड़ेगा, ऐसे बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। इन्होंने इतना अच्छा डांस किया कि इनकी वजह से आपको लगेगा कि हम कितने अच्छे डांसर हैं। हमने इनको महसूस कराया। और हमने इतना अच्छा डांस किया कि चुड़ैल सच में भाग गई। पहले बता देते, हम पहले ही डांस करते थे। Thank you so much.